ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्री रूपम सागर जातम सागर रघुनाथवितं तम सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सागर ललिता शिव विशाखावितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी नमस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So we are starting the chapter 5, associating with Krishna. Naveen Prabhuji, please. Okay, thank you. I will read Haribol. If one gets something superior, he naturally gives up all inferior things. We want enjoyment, but impersonalism and voidism have created such an atmosphere that we have become addicted to material enjoyment. There must be enjoyment in connection with the Supreme Person, Purusha or Saparaha, whom we can see face to face in the spiritual sky. We are able to speak personally with God, play with Him, eat with Him, etc. All of this can be attained by bhaktaya, transcendental loving service. However, the service must be without adulteration. That is to say, we must love God without expecting material remuneration. Loving God to become one with Him is also a form of adulteration. Thank you, Prabhuji. Ishu Prabhu. One of the major differences between the spiritual sky and the material sky is that in the spiritual sky, the head or the leader of the spiritual planets has no rivals. In all the cases, predominating personality in the spiritual planets is a plenary extension of Sri Krishna, the Supreme Lord, and his manifestations, multi multifarious manifestations presides over all the Vaikuntha planets. On Earth, for instance, there is a rivalry for the position of president or prime minister. But in the spiritual sky, everyone acknowledges the supreme personality of Godhead to be supreme. Those who do not acknowledge him and attempt to rival him are placed into the material universe, which is just like a prison house. As in any city, there is a prison, and the prison forms a very significant part of the whole city. So the material universe is a prison for the conditioned soul. It forms an insignificant part of the spiritual sky, but it is not outside of the spiritual sky, just as prison is not outside of the city. Hare Krishna. Hare Krishna. Deepak Prabhu. The inhabitants of the Vaikuntha planet in the spiritual sky are all liberated souls. In Srimad Bhagavatam, we are informed that their bodily features are exactly like God's. On some of these planets, God is manifested with 2 arms, and on other he has 4. The inhabitants of these planets, like the Supreme Lord, also manifest 2 and 4 arms. And it is said that one cannot distinguish between them and the Supreme Person. In the spiritual world, there are 5 kinds of liberation. Sayuja Mukti. Sayuja Mukti is a form of liberation in which one merges into the impersonal existence of the Supreme Lord, called Brahman. Another form of liberation is Sarupa Mukti, by which one receives feature exactly like gods. Another is Salokya Mukti, by which one can live in the same planet with God. By Sastri Mukti, one can have appliances similar to the Supreme Lords. And the type enables one to remain always with God as one of his associates, just like Arjuna, who is always with Krishna as his friend. One can have any of these 5 forms of liberation, but of the 5, the Sayuja Mukti, merging with the impersonal
aspect is not accepted by Vaishnava devotees. A Vaishnava wishes to worship God as he is and retain his separate individuality to serve him, whereas the Mayavadi impersonal philosopher wishes to lose his individuality and merge into the existence of the Supreme. This merging is neither recommended by Sri Krishna in Bhagavad Gita nor by the disciplic succession of Vaishnava philosophers. Lord Chaitanya Mahaprabhu wrote on the subject in this Shikshastakam, Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagdish kamaye mama janmani janmani share bhaktad bhakti rahe tukit vai. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor have I any desire to enjoy beautiful women, nor do I want any number of followers. What I want only is that I may have your causeless devotional service in my life, birth after birth. Success come 4. Thank you, Prabhuji. Swati Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Here Lord Chaitanya Mahaprabhu refers to birth after birth. When there is birth after birth, there is no liberation. In liberation, either one attains the spiritual planets or merges into the existence of the Supreme. In either case, there is no question of rebirth into the material world. But Chaitanya Mahaprabhu does not care whether he is liberated or not. His only concern is to be engaged in Krishna consciousness, to serve the Supreme Lord. The devotee does not care where he is, nor does he care whether he is born in the animal society, human society, demigod society, or whatever. He only prays to God that he shall not forget him and that he will always be able to engage in his transcendental service. These are symptoms of pure devotion. Of course, a devotee, wherever he is, remains in the spiritual kingdom even while in this material body, but he does not demand anything from God for his own personal elevation or comfort. Anushka Mataji. Hare Krishna Prabhu. Yes. Although Sri Krishna indicates that he can be easily reached by one who is devoted to him, there is an element of risk involved for the yogis who practice other methods of yoga. For them, he has given directions in Bhagavad Gita regarding the proper time to leave the gross body. Yatra kale ta anavratam avratam chaiva yoginah prayata yanti tam kalam vakshayami bharatarasabha. O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world one does or does not come back. Bhagavad Gita 8.23. Yes, Naveen Prabhu. Here, Krishna indicates that if one is able to leave his body at a particular time, he can become liberated, never to return to the material world. On the other hand, he indicates that if one dies at another time, hold a second. Here, Krishna indicates that if one is able to leave his body at a particular time, he can become liberated, never return to the material world. On the other hand, he indicates that if one dies at another time, he has to return. There is this element of chance, but there is no question of chance for a devotee always in Krishna consciousness, for he is guaranteed entrance into the abode of Krishna by dint of his devotion to the Lord. Agnir Jyotir Ahasukla Sanmasa Uttarayanam Tatra Prayata Gachanti Brahma Brahma Vido Jnanaha. Those who know the Supreme Brahman pass away from the world during the influence of the fiery god in the light at the auspicious moment during the fortnight of the moon and 6 months when the sun reveled in the north. Gita 8.24. Yes, Ishu Prabhu. The sun spends 6 months on the northern side of the equator and 6 months on the southern side. In Srimad Bhagavatam, we have information that as the planets are moving, so also the sun is moving. If one dies when the sun is situated in the northern hemisphere, he attains liberation. Deepak Prabhu. Yes, Prabhuji.
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगे प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णगतिः ते सक्तः शाश्वते मते एकया याति अनावृतिम् अन्यया वर्तते पुनः. The mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the moonless fortnight, or in the 6 months when the sun passes to the south, or who reaches the moon planet. Again, come back according to the Vedas. There are two ways of passing from this world. One is light and one is darkness. When one passes in light, he does not come back. But when one passes in darkness, he returns. Bhagavad Gita 8.25 to 26. This is all by chance. This is all by chance. We do not know when we are going to die, and we may die accidentally at any time. But for one who is a bhakti yogi, who is established in Krishna consciousness, there is no question of chance. He is always sure. Nayate Shriti Prathayanam Janan Yogi Muyati Kaschana Tasma Sarveshu Kaleshu Yoga Yukto Bhavarjuna. The devotees who know these two paths, O Arjuna, are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. Bhagavad Gita 8.27. It has already been ascertained that at the time of death, if one can think of Krishna, he is immediately transferred to the abode of Krishna. Yes, go ahead, Mataji. Anta kale cha mam eva smaran muktava kale varam ya prayati sa mad bhavam yati nasti atra samasyaha abhyasa yoga yuktena setsa nanya gamina paramam purusham divyam yati parthanu chintayan. And whoever at the time of death quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. He who meditates on the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, O Parth Arjuna, is sure to reach me. Bhagavad Gita 8.5, 8.8. Such meditation on Krishna may seem very difficult, but it is not. If one practices Krishna consciousness by chanting the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, he will be quickly helped. Krishna and his name are non-different, and Krishna and his transcendental abode are also non-different. By sound vibration, we can have Krishna associate with us. If, for instance, we chant Hare Krishna on the street, we will see that Krishna is going with us. Just as when we look up and see the moon overhead, we perceive that it is also going with us. If Krishna's inferior energy may appear to go with us, is it not possible for Krishna himself to be with us when we are chanting his names? He will keep us company, but we have to qualify to be in his company. If, however, we are always merged in the thought of Krishna, we should rest assured that Krishna is always with us. Lord Chaitanya Mahaprabhu prays, Nam na kari bahuda nija sarva saktis tatra pita niyamita samrane na kalaha etadrishi tava kripa bhagwan mamapi दुर्दैव में दृशा मिथ ज्ञानी ननुग्रह. O my Lord, your holy name alone can render all benedictions upon the living beings, and therefore you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies, and there is no hard and fast rule for chanting these holy names. O my Lord, you have so kindly made approach to you easy by your holy names, but unfortunate as I have no attraction for them. 6 Shrathakam 2.
Hello, Prabhuji. मेरा प्रभु जी आ गए। हरे कृष्णा। प्रभु जी को Hare Krishna. Merely by chanting, we can have all the advantages of personal association with Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is not only considered to be a realized soul, but an incarnation of Krishna himself, has pointed out that in this age of Kali, although men have no real facilities for self-realization, Krishna is so kind that he has given his Shabd, sound incarnation, to be utilized as the Yuga Dharma or way of realization of this age. No special qualification is necessary for this method. We need not even know Sanskrit. The vibrations of Hare Krishna are so potent that anyone can immediately begin chanting them without any knowledge of Sanskrit whatsoever. Vedeshu yajneshu tapeshu chaiva daneshu yat punyaphalam pradishtam atyeti sarvam idam viditva yogi param sthanam upeti Chadyam. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing austere sacrifices, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. In the end, he reaches the supreme abode. Bhagavad Gita 8.2. Yes. Prabhuji. Here Krishna says that the purpose of all Vedic instructions is to achieve the ultimate goal of life, to go back to Godhead. All scriptures from all countries aim at this goal. This has also been the message of all religious reformers or acharyas. In the West, for example, Lord Jesus Christ spread this message. Similarly, Lord Buddha and Muhammad. No one advises us to make our permanent settlement here in this material world. There may be small differences according to the country, time, and the circumstance, and according to scriptural injunction. But the main principle that we are not meant for the material world, but for the spiritual world is accepted by the genuine transcendentalist. All indications for the satisfaction of our soul's innermost desires point to those worlds of Krishna's beyond birth and death. Hari Bol. Oh, so, by the mercy of Guru and Gauranga, we have also completed the sixth book. Hari Bol to everyone. पता ही नहीं चला प्रभु जी। Wow. Jai. All glories to all the devotees. Yes, Prabhuji. So I guess we can take reflections now. Yes, Prabhuji. Ishu Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I really like the point before that, starting from where Prabhupada is starting is talking about how he's telling about the reason why we are here, that we want to enjoy and we are not accepting the Krishna as a supreme Godhead. So we are fallen down to this material world, and anyone in this spiritual world who does not see as a Krishna as a supreme Lord, he is bound to fall down in this material world. Starting from there, Prabhupada has also discussed about the Mahaprabhu's prayer, and that is very interesting. If we read Shiksha Ashtakam, we get to know that how really is to prayer. That in fact, in the second Shiksha Ashtakam, in 2nd verse, Prabhupada is quoting here that Mahaprabhu is asking for again and again birth, and it's very interesting. In all the books, Prabhupada is again and again saying that we have to get free from this birth and death cycle. But Mahaprabhu is quoting in the 6th ashtam that I will take birth and birth to serve you. This shows that this is at this level we have to keep the humility to serve the God and eagerness to serve the God. Even if we do not get liberated by this birth and death cycle, we have to serve it at any condition, even in this material world. And that is very smart way to ask God something, not directly, but indirectly, that I will serve anyhow. So if God pleases by our service, he will automatically take us back to the Godhead. That's very interesting. And also in the last 6th ashtam, it is that it's very interesting that how to pray to the God, and it's not just standing in front of deities and you do not know how to ask him. So this was very interesting to learn.
from these all prayers, that how actually to approach God and what to ask them. Yeah, this is what I like. This is how you can attain by prayers and by His mercy, God. Yeah. Good. Thank you. Thank you. Divya Prabhu. यस हरे कृष्णा प्रभु जी। Krishna Prabhu. यस तो प्रभु जी सेम मतलब यही पॉइंट अच्छा लगा था कि प्रभुपाद जी शुरुआत में बता रहे थे कि कैसे योगी ना भगवान से एक होने के लिए तपस्या करते हैं, और बाकी लोग भी जो भी हैं इतने सारी अलग अलग मुक्ति हैं तो उसके लिए ट्राई करते हैं, वन विद द गॉड होना चाहते हैं, तो अलग अलग मुक्तियों के बारे में बता रहे थे। लेकिन जो डिवोटी हैं वो क्या चाहते हैं, वो लिबरेट होना भी नहीं चाहते, वो वन विद द गॉड होना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ भगवान की डिवोशनल सर्विस एंगेज इन डिवोशनल सर्विस मतलब डिवोशनल सर्विस में एंगेज होना चाहते हैं, भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं बस। तो ये प्रभुपाद जी हमको बताए थे कि ये चैतन्य महाप्रभु बताए हैं हमें, तो इस तरह से हमारा भाव होना चाहिए कि हम बस हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस हमें भगवान के भक्त सेवा में लगना है, और उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं, नवधा भक्ति जिसे हम कहते हैं। Yes. 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 Thank you, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। Krishna Prabhu. Anushka Mata ji. पॉइंट आया था बीच में जब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब कि जो भगवान कहते हैं कि अगर जो मेरे लिए डिवोटेड है वो इजीली मेरे तक आ सकता है, लेकिन जो योगीज हैं तो या कोई और मेथड प्रैक्टिस करता है योगा का, तो उनके लिए प्रॉपर टाइम या प्रॉपर मेथड है बॉडी को छोड़ने का, तभी वो आ पाएंगे। तो बेसिकली हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि कोई और मेथड फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं, बट ये डिवोशन तो थोड़ा इजी हो जाता है। Yes. Sure. Okay. Thank you. Thank you. Swati Mata ji. एक पॉइंट तो वही जो अभी शेयर किया अनुष्का माता जी ने कि अबाउट द टाइमिंग्स जो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, प्रॉपर मतलब टाइमिंग्स बताए हैं कि जब लाइट होती है तभी वो योगीज कैन रीच टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। बट भक्तों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा नेम्स, तो होली नेम्स में उन्होंने किया है, तो लास्ट टाइम में भी वो दे कैन रिमेम्बर कृष्णा। तो अगर लास्ट टाइम में कृष्णा को रिमेम्बर कर रहे हैं तो फिर वो अल्टीमेटली कृष्णा के पास ही जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पे वो जैसा दीपक प्रभु ने भी बताया डिफरेंट टाइप ऑफ मुक्ति भी बताई, जिसमें से अगर वो भगवान ने बोला कि जो कुछ मुक्ति ऐसी होती है कि जिसमें अ पर्सन कैन बी वन विद गॉड, तो जो बेसिकली इम्पर्सनैलिटीज का वो बता रहे थे कि उन लोगों के लिए कि दैट इज नॉट अ गुड मुक्ति। और एक पॉइंट और अच्छा लगा था जिसमें शशकाष्टकम से लिया था कि डिवोटी एक्चुअली जो भगवान के भक्त हैं वो कुछ नहीं चाहते, दे ओनली वांट सर्विस, दे ओनली वांट टू सर्व कृष्णा इन एनी वे। तो यही पॉइंट अच्छे लगे इसमें जो इनक्रक्स बताया था इस चैप्टर में। ये श्लोक था ना माता जी, ना धनम ना जन्म ना धनम ना जन्म, राइट, वही वाला। थैंक यू। अच्छा, एक चीज ना मैंने मिस कर दी, इस बुक के बाद ही दे रखा था। सो दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ भगवद गीता, दिस वाज द वेरी फर्स्ट एडिशन। इसके बाद दे रखा था इनको, तो आई थिंक ये मतलब आई शुड शेयर इट। So this was published by the Macmillan Company, complete edition Bhagavad Gita as it is and पहले इसकी कॉस्ट पेपरबैक $7.95 and हार्ड कवर वाज $11.95. Yes. And my realizations, एक मेरे को मतलब मोस्टली तो कवर कर दिया। एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बात बताया कि ना भगवान ने सारी जो जितनी अपनी शक्ति है ना, जितनी पावर्स हैं, वो सब अपने नाम में डाल दी। ठीक है, तो भगवान कह रहे, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो कृष्णा इज देयर विद अस,
and there is no doubt in that. अगर आप street पे भी कर रहे हो तो Krishna is accompanies us on the street also. So इसलिए एक चीज कंक्लूड करी कि मैंने कहा जब हम चैंटिंग करते हैं we should remain very serious. We should not engage in here and there. जैसे हम कभी बात करते करते चैंटिंग करते हैं, फोन देखते देखते चैंटिंग करते हैं, तो that should be avoided, because if Krishna is with us, then और क्या चाहिए, because we are doing everything for Krishna to get his company or get his blessings. तो अगर हम भगवान से we are मतलब ऐसा होना चाहिए कि 1-to-1 कम्युनिकेशन होना चाहिए जब हम चैंटिंग करते हैं. अगर हम चैंट कर रहे हैं तो it should be between you and Krishna only, and no one should interrupt that communication. So we should do offenseless chanting, because Prabhupada have clearly said कि जब आप chant करते हो तो Krishna is there with you, he's giving you his company. So I think इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए. एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था महाराज का, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद भक्ति रसमत सिंधु नहीं, गौरांग प्रभु थे. तो गौरांग प्रभु बता रहे थे कि ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि अब लेट सपोज कि मैं हूँ और मैं दीपक प्रभु को बुला रहा हूँ, दीपक प्रभु ठीक है, और दीपक प्रभु मेरी साइड देख रहे हैं लेकिन मैं कहीं और देख के बुला रहा हूँ, तो दीपक प्रभु को कैसा लगेगा. तो सिमिलरली इट हैपेंस व्हाइल चैंटिंग. अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं और बुला तो हम कृष्णा कृष्णा रहे हैं लेकिन हम देख कहीं और रहे हैं, तो मतलब इट इज नॉट गुड और एथिकल बिहेवियर. सो चैंटिंग पे हमें मतलब वी शुड डू ऑफेंसलेस चैंटिंग. यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. नवीन प्रभु जी. हरे कृष्ण. हाँ प्रभु जी वैसे तो सभी कुछ कवर हो गया है, लेकिन जो आपने भगवान के नाम को लेके बोला है वो एक कल के पॉइंट में आया था ना. जैसे प्रभुपाद बता रहे थे एक जगह कि सोता हुआ व्यक्ति भी अगर आप चिल्लाते हैं राइट, तो हमारा जो हियरिंग सेंस है वो एक्टिव रहता है राइट. यू कैन स्टिल हियर अगर लाउडली शाउट करो या कुछ होता है तो उसी प्रकार से जैसा अभी आपने बताया भगवान का नाम लेने के लिए, तो हम जब चैंट करते हैं तो भगवान बिल्कुल अवतरित होते हैं. भगवान अपने नाम में पूरा उन्होंने दिया हुआ है. अब मैं वही भी सोच रहा था कि जो आपने बोला कि हमें ऑफेंसलेस चैंटिंग करना है, और ये सबसे बड़ा आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है भक्तों के लिए, जब से मोबाइल जैसे जीव का जन्म हो गया है. हाँ, क्योंकि क्या होता है कि मोबाइल हमारे साथ में रहता है हर जगह, बाथरूम से लेके सोने तक, बेड में हर जगह साथ में चलता है. तो हर 2 मिनट में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कौन सा मैसेज, व्हाट्सएप चेक कर लो, टेलीग्राम चेक कर लो, फेसबुक चेक कर लो, सब चेक कर लो, वेबसाइट डिफरेंट वेबसाइट. तो हर 2 मिनट में पता नहीं क्यों वो ऐसा एक खुजली सी रहती है, वो देखते ही रहते हैं लोग. हाँ, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, ये हमारे भक्त समाज में भी फैल गई है. और इसका क्योर तो वो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से ही होगा, और हमारी भगवान के नाम के प्रति जितनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा कि नहीं ये नाम नहीं है, ये भगवान स्वयं आ रहे हैं जब हम नाम ले रहे हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया, तो वो उससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. एंड पॉइंट्स तो सबने बहुत अच्छे से सारे रिफ्लेक्शन किए ही. मुझे वही लग रहा था जब वो पढ़ रहे थे हम कि अरे नॉर्थन हेमिस्फीयर में या इधर मरेंगे तो क्या होगा, लेकिन बाद में फिर वो आया ना कि भक्तों के लिए ये नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा लगा. ठीक है, अभी उस रास्ते पर तो हैं हम लोग कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू बी डिवोटी, तो सम होप इज देयर. यस यस नहीं तो हम ये बाकी यस नहीं, बोलिए प्रभु जी बोलिए. नहीं मैं कह रहा हूँ यही अंदाजा लगाते रहते भी सूरज कहाँ है अभी इस टाइम. धन पे सदन पे प्राण छोड़ राइट जाते हैं. राइट. एंड अनदर थिंग मैं बोलने वाला था कि प्रभुपाद ने आज यहाँ से ही स्टार्ट किया जहाँ कल खत्म किया था, अबाउट इम्पर्सनलिज्म और वॉइडिज्म में. इस चैप्टर में वही बोला है ना, एंजॉयमेंट के बारे में लेके. यस, दैट्स ऑल प्रभु जी. आप अश्विन प्रभु जी बोलेंगे कुछ? अश्विन प्रभु जी से सुनना चाहते हैं हम. नहीं मैं सोच रहा था, एक जयप्रताप का महाराज का एक लेक्चर में सुन रहा था मैं नाम के ऊपर कि पहले लोग हजारों साल तक तपस्या किया करते थे सतयुग में. उसके बाद द्वापर युग में पूजा का आ गया और तरह से. फिर देखते हैं हम लोग, सॉरी, त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में और तरीके आ गए. फिर कलयुग में नाम आया. तो कोई कह सकता है नाम कलयुग में आया, इससे पहले नहीं था क्या नाम? बोले पहले भी तो हरे कृष्णा कर सकते हैं हम. तो नाम तो हमेशा से ही हर युग में रहा, पर बाकी युगों में बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन थे. मतलब ऐसे कोई भी नाम नहीं ले सकता था. अगर किसी ने ले लिया है मतलब उसको फॉलो करना. अगर ऐसे कहना हरे कृष्णा मतलब आप ऐसे नहीं है कि मॉर्निंग में बिना नहाए धोए ले लिए, या बिना वो फीलिंग के साथ लिए, इतना प्रेम नहीं है ले लिए फिर भी कि मुझे सूर्य माला कंप्लीट करनी है तो चलो नाम ले लेता हूँ.
बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे और उसमें हल्का फुल्का अपराध होने पे भी बहुत बड़ा बड़ा दंड भी था। तो इसलिए पुराने युगों में नाम इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। नाम था तो हमेशा से ही है, हमेशा है, रहेगा, तो बट वो एज एक्सेसिबल नहीं था, इसलिए बाकी लोग दूसरे प्रोसेस अपना लिया करते थे। तो इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, अब इस जीव को ज्यादा रेस्ट्रिक्शन में नहीं डालते हैं बात कर ले, बोले वही बहुत है, नाम तो क्या करेगा। तो इसलिए भगवान के बारे में चर्चा एक विषय हो गया, इसलिए हम बताए स्मरणम। स्मरणम जब हम पढ़ते हैं कि नवदा भक्ति के जो रूप आते हैं, जो प्रोसेस आता है उसमें बताया नव स्मरणम और कीर्तनम। तो बोले भाई जो स्मरण करेगा भगवान के बारे में, देन ही विल टू कीर्तनम ऑल्सो। तो पहली बात क्या की कि रूल रेगुलेशन हटा लिए ताकि हम लोग चैंट कर सकें, और चैंटिंग भी, क्योंकि कीर्तनम इज बिकमिंग डिफिकल्ट, तो कहते ठीक है, इफ यू विल डू स्मरणम देन यू विल बी एबल टू डू कीर्तनम ऑल्सो। तो बैक टू बैक है दोनों, जैसे हम लोग ये रीड करते हैं। बाकी अब जैसे सीनियर भक्त सब लोग लेक्चर्स वगैरह हम सुनते हैं, तो हाउ टू इंक्रीज अवर चैंटिंग और बेटर चैंटिंग, तो उसका बताया कि वी शुड डू लॉट ऑफ स्मरणम ऑल्सो। तो दीज 2 पॉइंट्स आई वांटेड टू हाईलाइट। और उसके बाद कोई कह सकता है कि ठीक है, अब कलयुग में हमें नाम दे दिया, इसका मतलब आपने इजी प्रोसेस दिया है, तो क्या उसका बेनिफिट कम है? तो मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद ने श्लोक भी दिया उसका भगवद गीता के, जिसमें बताया गया है कि नहीं, जो नाम करने वाला है, डिवोशनल एक्टिविटीज करने वाला है, उसको वो सेम बेनिफिट मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी कई लाखों लाखों साल की तपस्या करने से मिलते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो हमारा जो प्रोसेस है वो सुप्रीम प्रोसेस भी है, इजी प्रोसेस भी है, और जो कलयुग में जो कम एज है उसमें इजीली अटेंड भी हो सकता है। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. So we have concluded it now. Panchakalpa Besha Kripa Sindhu Evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavyo Namo 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 Jagad Guru Srila Prabhupada की की जय। Jai.